Good morning. Have you done homework? What is homework? Question number 13th and 17th ना? 13th हमने सॉल्व किया था ना? अच्छा लिखना था बाकी. 13th में कोई डिफिकल्टी नहीं ना? Okay. And 17th? 17th में क्या था? Calculate the degree of operating, financial and combined leverage. Sales दिया है आपको, variable cost दिया है, fixed cost दिया है, interest दिया है. So how much is your operating leverage? 4.33. हाँ आगे 33 और 1.392 929. Okay, and combined leverage 692. और आगे इतना ही कैलकुलेट किया ना? हाँ हाँ. नॉर्मली यहाँ पे आप 2 डिजिट्स तक ले सकते हो. इन द प्रीवियस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट राउंडिंग ऑफ डिफरेंस पॉसिबिलिटी हमने 4 डिजिट्स तक लिया था. एग्जाम में 2 डिजिट्स तक अपने कैलकुलेट किया तो भी चलेगा. एंड यू नो द रूल कि नेक्स्ट नंबर अगर 5 या उससे ज्यादा हो तो राउंडिंग ऑफ करते टाइम प्रीवियस नंबर एक ऐड करके आपको लिखना है, राइट? तो 17th is completed. Now which problem we are discussing? Question number 10th. 10th में 4th, 5th and 6th हमने कंप्लीट किया था. Now first part, degree return on investment. Now don't write, just listen first of all. We'll discuss the formula for calculation of return on investment and then we will solve. Okay, same formula ratio analysis में again we'll be discussing, but that time will not be going in that detail. Okay, this return on investment can be calculated from two approaches or two point of view. One is total approach and another is equity shareholders approach. Say for example, total capital required is 10 lakhs. Okay, इसमें इक्विटी शेयर्स सपोज थे 4 lakhs and debentures थे 6 lakhs. Rate of interest was suppose 10%. ठीक है, तो बिजनेस में टोटल फंड्स इन्वेस्टेड कितने हैं? 10 lakhs. हमने 10 lakhs प्रोक्योर किया इक्विटी शेयर होल्डर से एज वेल एज डेट फंड्स, राइट? नाउ कंपनी ने ये जब 10 lakhs इन्वेस्ट किया रहेगा, कुछ ना कुछ तो मशीनरी परचेस किया रहेगा. बाय डिप्लॉइंग दैट प्लांट एंड मशीनरी वी आर जनरेटिंग द रेवेन्यू, राइट? तो सेल्स माइनस से वेरिएबल कॉस्ट यू विल बी गेटिंग कंट्रीब्यूशन minus fixed cost you will be getting operating profit. Can we say this is the business profit without considering any finance cost? By doing day to day management ऑपरेशन करके हमने इतना बिजनेस ऑपरेशन करके हमने इतना प्रॉफिट कमाया. फ्रॉम दिस प्रॉफिट वी विल बी रिपेइंग आवर फाइनेंसर्स, बराबर? तो दिस प्रॉफिट इज अवेलेबल टू, सपोज ये प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ओके, now this 2 lakhs profit is available towards debt holders as well as equity shareholders, right? Repayment of capital is another scenario, that is not your expenditure, it is just repayment of liability, right? but ये जो profit है 2 lakhs, इसमें से part fund हम debt holders को repay करेंगे as a interest, right? and part amount as a dividend will be repaying towards equity shareholders. So we can say this 2 lakhs is available for giving return to total capital, राइट? अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट जाएगा. इंटरेस्ट हमने 6 लाख 10% से अज्यूम किया है तो 60,000 जाएगा. तो ईबीटी 1,40,000. सपोज टैक्स इज कमिंग टू से फॉर एग्जांपल 40,000. ओके, तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 1 lakh. Now this earnings is specifically available to equity shareholders, right? Now when I am calculating return on investment,
देयर आर टू अप्रोचेस। अगर मैं टोटल कैपिटल के ऊपर रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूं तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली रिटर्न आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सपोज आपने मेरी कंपनी में 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, as a return I am giving you 10,000 rupees, whether it is interest or dividend, whatever it is. What is the rate of return you have earned? 10%. How you have calculated? 10,000 divided by 1 lakh. तो इसका मतलब नॉर्मली आप रेट ऑफ रिटर्न जो कैलकुलेट करोगे, न्यूमरेटर में रिटर्न लोगे, डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट लोगे इनटू 100, राइट? नाउ व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन टोटल कैपिटल एज सच, मतलब 10 लाख जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है, इसके ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है आपको? 2 lakhs, because 10 lakhs includes equity plus debt, and this return also includes return available to equity plus debt. So when it is asked to calculate return on investment on the basis of total capital employed or total approach, what you will be taking is return on investment will be earnings before interest and tax, that is operating profit, divided by total capital employed. Now this total capital employed will be equity shareholders fund plus debt funds, and that obviously it will be long term, right? Short term debt, say creditors also debt only, credit is also short term liability, but that we are not considering as a capital employed, that is for day to day management. So इसलिए जो debt लेंगे हम long term debt लेंगे, right, into 100. Are you getting? So whenever it is asked to calculate a return on investment, normally we calculate on the basis of total capital employed, and it will be calculated as operating profit divided by total capital employed, which will be including equity shareholders fund, preference shareholders fund, as well as debt funds into 100, right? अब जब इक्विटी शेयर होल्डर्स अप्रोच से आप कैलकुलेट कर रहे हो, मींस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, हाउ मच इज रेट ऑफ रिटर्न जनरेटेड, दैट वी आर कैलकुलेटिंग। नाउ यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है? 4 lakhs, राइट? एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग कितना है यहां पे? 1 lakh. This is the ultimate earnings available to equity shareholders. So if you are calculating the rate of return on investment from the point of view of equity shareholders, simply it will be 1 lakh divided by 4 lakhs into 100, बराबर? So this will be coming to say 25%. तो यहां पे आप देख सकते हो total profit was 20% and return available to equity shareholders is 25%. Why it is happening so? Because means on debt funds we are paying 10% return, whereas company is earning 20% return, means the company is favorably financially leveraged, so it is able to generate higher return to equity shareholders. But the bottom line is कि जब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको न्यूमरेटर में जो रिटर्न लेना है, दैट विल बी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो दिस विल बी नेट earnings available to equity shareholders divided by equity shareholders fund. Here we will be taking only equity capital, right? If there is retained earnings, should we take retained earnings or we should not take retained earnings? First of all, everyone knows what do you mean by retained earnings. अच्छा, retained earnings मतलब क्या? कंपनी को इस साल से फॉर एग्जांपल टोटल प्रॉफिट हुआ है से 5 lakhs. Okay. Now this 5 lakhs net profit earnings available to equity shareholders. Okay. Now this 5 lakhs can be distributed as a dividend to equity shareholders. Normally, does company declare 100% as a dividend? Yeah, part amount they will keep with themselves. Part amount they normally keep with themselves, right? So suppose 5 lakhs में से 1 लाख उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो 4 lakhs कंपनी खुद के पास रिटेन कर रही है. दिस 4 lakhs is called as retained earnings. Right? So what question I was asking? Retained earnings, where it will be reflected? अब ये जो बैलेंस है retained earnings 4 lakhs which is not distributed profit, आपके बैलेंस शीट में कहां पे रिफ्लेक्ट किया जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में रिफ्लेक्ट किया जाएगा. तो सपोज टोटल प्रॉफिट अर्न्ड इससे 5 lakhs, दिस इज द अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, एंड कंपनी के बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी कैपिटल था से फॉर एग्जांपल 10 लाख, रिटेन्ड अर्निंग्स रिजर्व्स एंड सरप्लस से फॉर एग्जांपल था 10 लाख, टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इज 20 lakhs. Question what I want to ask is,
जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स कैलकुलेट करोगे तो न्यूमरेटर में तो आपको अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स लेना है, विच विल बी 5 lakhs डिवाइडेड बाय, शुड वी टेक ओनली इक्विटी कैपिटल और टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड? श्योर? टोटल कैपिटल मतलब टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड लोगे या कैपिटल सिर्फ लोगे? सिर्फ कैपिटल लोगे, व्हाई? हाँ, राइट, okay, but then unfortunately it will be equity shareholders fund. Why? Because normally that reserves and surplus or retained earnings, what is it? It is equity shareholders fund only. We can say it is equity shareholders fund which is reinvested into business, right? हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? रिटर्न अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. बेसिकली ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है उससे क्या होगा, हम यहाँ पे एसेट में इन्वेस्ट करेंगे एंड एसेट से ही तो हम रिटर्न जनरेट करेंगे, राइट? वैसे तो ये जो 10 लाख रिजर्व एंड सरप्लस एज अ रिटेन अर्निंग्स था वो किसको देना चाहिए था? इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना चाहिए था. एज गुड एज हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया है एंड उनसे वापस 10 लाख रुपए लेके कंपनी में इन्वेस्ट ही तो किया है, राइट? सो रिजर्व एंड सरप्लस इज शेयर होल्डर्स मनी विच इज अगेन इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस. तो ये 10 लाख हमने उनसे कैश में लिया है एंड ये जो 10 लाख है उनके फंड्स हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो जो हमने 5 लाख रिटर्न जनरेट किया है that is again because of this asset which is reinvested, right? तो ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो भी आपको कंसीडर करना होगा because that is the equity shareholders fund which is invested into business by utilizing that we are generating the returns. Are you getting? So total equity shareholders fund आपको डिवीजन में लेना होगा, that is in simple words net worth, right? Have you understood both the formulas? So जब first हम total approach से calculate कर रहे हैं, what we are calculating is a rate of return on total capital employed. Okay, तो it will be for total financers. जिन लोगों ने कंपनी में फाइनेंस किया है या इन्वेस्ट किया है उनके लिए रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कितना हो रहा है कंपनी का. And when we are calculating from equity shareholders point of view, we are calculating only rate of return which is available to equity shareholders, which will be after paying all the finance cost except equity shareholders fund. Have you understood? So shall we calculate now? Shall we write it now? So now question में हमें सिर्फ rate of return calculate करने के लिए बोला है. So we'll calculate from both the approaches. Okay? So third working के बाद continuation first working, calculation of return on investment in this first long term fund approach, yes हम total approach भी कह सकते हैं. The formula is return on investment is equal to EBIT divided by total capital employed. We can write total capital employed. यहाँ पे आप लिख सकते हैं that is shareholders fund plus long term debt. So हमने शायद से फर्स्ट वर्किंग में EBIT कैलकुलेट किया था 27 lakhs. हाउ मच इज टोटल कैपिटल? यहाँ पे हम वर्किंग दिखा सकते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया आपको? 45 lakhs ना, प्लस 55 lakhs, that is 100 lakhs. So 27 lakhs divided by 100 lakhs, it will be 27% return. Now before proceeding, tell me whether the firm is favorably financially leveraged or not favorably financially leveraged. Yesterday we have discussed. First of all, one more homework was there that you are expected to read
that favorable financial leverage? Have you read? हमने क्या कहा था? फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज कब कहेंगे? जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर हो एज कंपेयर टू इंटरेस्ट, राइट? एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लॉन्ग टर्म अप्रोच से ही कंसीडर करना होगा, क्योंकि टोटल डेट का फाइनेंस भी हमें कंसीडर करके रिटर्न कैलकुलेट करना होगा, राइट? सो कंपनी इज जनरेटिंग 27% रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। उसमें से जो डेट होल्डर्स का फंड है उनको हम क्या रेट से इंटरेस्ट दे रहे हैं? 9%। मतलब उनके पैसे लेके हम 27 से जनरेट तो कर रहे हैं बट रिपे कर रहे हैं 9% से। सो दैट डिफरेंस विल बी एडिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, देयरफॉर इट वी कैन कंसीडर दैट इट इज फेवरेबली फाइनेंशियल लेवरेज। एंड जब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 27% से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है। हम 27% 55 लाख के ऊपर जनरेट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको तो सिर्फ 9% से दे रहे हैं। एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वेट्स अलग अलग है, अमाउंट अलग अलग है। इक्वल होता तो डिफरेंस एग्जैक्टली सेम आता। एग्जैक्टली डिफरेंस सेम नहीं आएगा, मतलब 27 माइनस 9 डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, बट देन डेफिनेटली इट विल बी मोर देन 27%। ओके, so this was first long term approach. Write down now second, equity shareholders approach. Equity shareholders fund approach. यहां पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी earnings available to equity shareholders. जो भी सारे पेमेंट्स है वो सब पेमेंट लेस करने के बाद, यानी कि टैक्स लेस करने के बाद, अगर प्रेफरेंस शेयर होता तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करने के बाद जो नेट आएगा, दैट यू हैव टू कंसीडर। therefore you have written earnings available to equity shareholders divided by equity shareholders fund. So what was the net earnings available to equity shareholders fund? 22 lakhs 95,000 divided by equity shareholders fund was 45 lakhs। 45 ना? 55 था क्या? ओके, 45 डेट का था क्या फिर? 41.72%, right? So you can see the rate of return available to equity shareholders has increased because of debt content into capital structure, right? So this was answer of first. अब second question क्या था? Does it have favorable financial leverage? So we already discussed, so we can directly write. So write down answer of second. The firm has, firm या company है? Question में क्या word है? Firm. The firm has favorable financial leverage. The firm has favorable financial leverage because the return on investment, because the return on investment from long term fund approach, into bracket 27% bracket complete, is more than interest rate into bracket 9%, full stop. Therefore the firm is able to maximize return, the return to equity shareholders. Firm is able to maximize the return to equity shareholders. Written? Now next question is,
आपको दिया है एसेट टर्नओवर रेशियो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस एसेट टर्नओवर रेशियो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेशियो क्यों लगते हैं? बेसिकली हम रेशियो एनालिसिस में ये रेशियो स्टडी करने वाले. बट देन नाउ क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन है, वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज द एसेट टर्नओवर रेशियो. बट बिफोर दैट, व्हाई वी रिक्वायर रेशियो? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज रेशियो इंपॉर्टेंट? डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? नॉर्मली जब आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट पी एंड एल देखोगे, वी कंसीडर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज रिफ्लेक्टेड बाय पी एंड एल, राइट? पी एंड एल एंड बैलेंस शीट. पी एंड एल से आपको प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आएगी, बैलेंस शीट से एसेट एंड लायबिलिटीज पोजीशन समझ में आएगी. बट देन आफ्टर जस्ट सीइंग दैट पी एंड एल एंड बैलेंस शीट, विल यू बी एबल टू एनालाइज द परफॉर्मेंस कि पिछले साल के कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म किया है, या एज कंपेयर टू अनदर कंपनीज हाउ इट हैज परफॉर्म? डायरेक्टली देख के आपको नहीं समझ में आएगा. So what we do normally for that, we calculate ratios. Various ratios are there to understand the performance of the company. Simple example, net profit ratio. Net profit ratio reflects कि क्या profitability percentage है कंपनी का, बराबर? So डिटेल में जाएंगे रेशियो के बाद में, but first of all ratios are required for comparison and analyzing purpose. Okay? तो asset turnover ratio क्या है? It is simply calculated as sales upon assets. It is simply calculated as sales upon assets. What is the purpose of this ratio or what it helps to understand? जब भी आप रेशियो स्टडी करोगे, रेशियो एनालिसिस में, each and every ratio what purpose it is serving, that you have to first of all understand कि परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए ये रेशियो हमें किस तरह से हेल्प करेगा. वंस यू अंडरस्टैंड दैट, आपको रेशियो बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके? तो सेल्स अपॉन एसेट्स, why it is required? Say for example there are two companies, company A, company B. Both are belonging to same industry, say steel industry से belong कर रहे हैं. Okay? कंपनी A के टोटल एसेट्स है, या से फिक्स एसेट्स मान के चलेंगे फिलहाल. कंपनी A के फिक्स्ड एसेट्स है से 100 lakhs एंड यहां पे भी 100 lakhs. कंपनी ए ने सेल्स टर्नओवर जनरेट किया है 200 lakhs एंड बी ने जनरेट किया है 300 lakhs. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हम सेल्स कैसे कर पाएंगे? आपके पास प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कहां से होंगे? बाय यूजिंग द प्लांट एंड मशीनरी. मींस बाय डिप्लॉइंग द फिक्स्ड एसेट्स वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर द गुड्स एंड देन ओनली वी आर एबल टू सेल. So can we sell? The performance of the sale is depending upon the asset which are invested into company, right? तो यहाँ पे कंपनी ए एंड कंपनी बी में दोनों में एसेट तो सेम इन्वेस्टेड है, सेम अमाउंट के इन्वेस्टेड है, से 10 प्लांट एंड मशीनरी दोनों की कैपेसिटी है. ओके? कंपनी ए का सेल्स टर्नओवर रेवेन्यू अमाउंट है 200 lakhs एंड कंपनी बी का 300 lakhs. Which company is performing more better? कंपनी बी. मींस वी कैन से कंपनी बी ने फिक्स्ड एसेट को मोर इफिशिएंटली यूटिलाइज किया है. कंपनी ए के पास माइट भी उनकी मार्केटिंग टीम स्ट्रांग नहीं रहेगी, इसलिए दे आर ऑपरेटिंग फॉर ओनली से 8 आवर्स, उनके पास उतने ही सेल्स ऑर्डर्स है. लेकिन कंपनी बी इज ऑपरेटिंग फॉर 16 आवर्स एंड दे आर एबल टू जनरेट हायर रेवेन्यू विद सेम इन्वेस्टमेंट, राइट? तो जब इस तरह से डेटा होगा तो डायरेक्टली यू कैन से कंपनी बी ने एसेट मोर इफिशिएंटली यूटिलाइज किया है and they are able to generate higher revenue for the company, right? But then if amount are different, यहां पे से 130 lakhs, ठीक है? अब यहां पे तो मैंने वैसे तो अमाउंट सिंपल लिया है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट रहता कंपनी ए का 101 lakhs 43,675 एंड कंपनी बी का 150 lakhs 67,235 एंड सेल्स भी इसी तरह ऑड फिगर्स में होते, तो क्या आप डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हो? नाउ यू कैन नॉट कंपेयर, क्योंकि कंपनी बी का सेल्स रेवेन्यू ज्यादा है लेकिन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है. ऑब्वियसली जब आप नई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करोगे, ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी परचेस करोगे, यू विल बी एबल टू जनरेट मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, वी कैन से, राइट? तो यहां पे डायरेक्टली आप कंपेयर नहीं कर सकते. सो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बेस सेम करना होगा. दैट इज पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हम कितना सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो कैलकुलेट करना होगा. इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट. ओके? तो यहां पे सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स कितना आ रहा है? यहां पे 2, ठीक है? एंड यहां पे 300 डिवाइडेड बाय 130, 2.31. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस?
दोनों कंपनी में अगर एक एक रुपए आप फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो द कंपनी इज एबल टू जनरेट 2 rupees as a sales revenue in company A and company B 2.31. Now again you can compare. Now you can say company B is performing more better, right? This you can calculate only if you have calculated the ratio sales upon fixed asset, right? And this ratio is called as asset turnover ratio. बेसिकली ये रेशियो का पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड हाउ इफिशिएंटली द कंपनीज एसेट्स आर यूटिलाइज्ड टू जनरेट द रेवेन्यू. I'll repeat the statement. This ratio helps us to understand how efficiently the assets are utilized by company to generate the revenue, right? तो जब ये मैनेजमेंट को पता चलेगा कि इंडस्ट्री में सपोज बी कंपनी, सपोज आप ए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है, आपने कंपैरिजन के लिए बी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो देखा है, इट इज 2.31. नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग? कंपनी बी जब 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए 2.31 का सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो हम क्यों जनरेट नहीं कर पा रहे? तो कहीं ना कहीं तो हमारी सेल्स टीम इफिशिएंट नहीं है, मतलब दे आर नॉट एबल टू जनरेट द ऑर्डर. सपोज आपके पास ढेर सारा ऑर्डर्स है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो मीटअप नहीं हो रहा, मीन समवेयर देयर इज अ डिफिशियंसी और लेस एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. So you can ask for any department कि marketing department क्या कर रहा है या production department क्या कर रहा है. So you'll be able to generate the higher revenue. Are you able to understand how this ratio will be helping the company? When you are studying, you have to think practically real life scenario. Okay. So when you are as a finance manager, you will be studying all these ratios and you will be comparing with the other companies. First of all, have you understood the ratio? Asset turnover ratio is calculated as simply sales turnover divided by asset. अब क्वेश्चन पूछते टाइम इस तरह से पूछा जाएगा, what is fixed asset turnover ratio? In that case, we will be taking sales divided by fixed asset. But if only asset turnover ratio is been asked, then we will be taking sales upon total assets invested into company, right? And what is the purpose of this ratio? To understand the efficiency of utilization of asset. Okay. Now what is been asked in the question? You have been given, if the firm belongs to industry whose asset turnover ratio is 3, does it have high or low asset leverage? मतलब इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड 3 है, तो अपनी जो फर्म है उनका एसेट टर्नओवर रेशियो हायर है या लोअर है? नाउ दिस सेम क्वेश्चन जब हमने इतने डिटेल में डिस्कस करने के बाद जब टेस्ट में डाला था क्वेश्चन, स्टूडेंट हैज मैनेज्ड टू डू वेरियस मिस्टेक्स. व्हाट दे हैव डन इज, means repeatedly in 2 tests I have given same question and repeatedly student ने common mistake किया था. What they have did, asset turnover ratio का formula क्या है? Sales divided by total assets. बराबर. Now student ने क्या किया? 3 is equal to sales. Sales कितना दिया है आपको? 75 lakhs divided by total assets, and total assets they have managed to calculate is 25 lakhs. यहाँ पे टोटल एसेट्स पूछा किसने है? टोटल एसेट तो पूछा ही नहीं है. आपको क्या पूछा है कि इंडस्ट्री एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3, डज आवर फर्म इज हैविंग हायर एसेट टर्नओवर रेशियो और लोअर एसेट टर्नओवर रेशियो? तो बेसिकली हमें कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना होगा एंड दैट यू हैव टू कंपेयर विद द इंडस्ट्री, राइट? मतलब ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री में जो भी कंपनीज है, दे आर एबल टू जनरेट 3 rupees एज अ सेल्स रेवेन्यू फॉर 1 rupees एज अ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो अपनी कंपनी उससे ज्यादा जनरेट कर रही है, लोअर जनरेट कर रही है, दैट एनालिसिस यू हैव टू डू, राइट? तो यहां पे हमें कंपनी का या फर्म का एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना होगा, राइट? एंड देन यू विल बी एबल टू कंपेयर विद 3 एंड देन यू कैन राइट अ कमेंट. ओके, सो राइट डाउन. ये थर्ड वर्किंग, लास्ट वर्किंग है ना ये. सो राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला एसेट turnover ratio, this is equal to sales divided by total assets. हमने ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी फॉर्मूला लिखा था, वो हाईलाइट करके रखो या बॉक्स में हाईलाइट करके रखो, क्योंकि जब रिवीजन करोगे आप सारे प्रॉब्लम्स रीड नहीं करोगे, सो एटलीस्ट फॉर्मूलाज विल बी एबल टू स्टडी. So asset turnover ratio is equal to sales upon total asset. So calculate and tell me what is asset turnover ratio of the company? Exactly.
हाउ मच इज द एसेट टर्नओवर रेशियो ऑफ कंपनी? आई कैन गिव यू क्लू, यहाँ पे सेल्स आपको 75 lakhs लिखना है. हाउ मच? थिंक. Many times you don't get answers with the formula and study. You get answers with normal common sense. How? How much you are taken total assets? How variable cost is assets? Asset is asset, na? Sandesh, you are getting how much? 0.75. That is correct. Huh? Obviously, you have 0.75. Obviously, when you have seen the balance sheet, right, यहाँ पे कोई भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी दिया नहीं है. मतलब लाइबिलिटी साइड की जो टोटल है 45 lakhs plus 55 lakhs 100 lakhs सेम विल बी द टोटल ऑन द एसेट साइड. क्योंकि नॉर्मली एसेट की आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज एंड एसेट की टोटल मैच होती है, टैली होती है, राइट. सो यहाँ पे टोटल एसेट्स दिया नहीं है बट लाइबिलिटीज की टोटल आपके पास है. सो यू कैन टेक दैट ओनली 100 lakhs. इसलिए मैंने कहा आपको कि आपके स्टडी एंड फॉर्मूले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नॉर्मल जो एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड. Now when equity and debt is been given and any other obligation is not been given outside as liabilities, means it is total of liabilities, same will be the total of assets. तो यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हो इक्विटी प्लस डेट, एंड यहाँ पे ये भी लिख सकते हो टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स. So therefore it will be 0.75. ये कैलकुलेट करना एक्सपेक्टेड है, बट हाउ आई डोंट नो. व्हेन वी आर डिस्कसिंग in so detail and trying to discuss each and every concept, not just with formula but we are trying to discuss with practical example, but still जब टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस. क्योंकि यहाँ पे जब मैं बताता हूँ देयर इज एटलीस्ट 1 or 2 स्टूडेंट्स डेफिनेटली हु गेट्स करेक्ट आंसर, लेकिन टेस्ट में वो भी गलती कर जाते हैं. सो नॉर्मली जब आपकी एग्जाम रहेगी यू हैव टू मेंटेन योर काम. ओके, think properly and then only you have to write. So यहाँ पे industry, the company which is belonging to particular industry का asset turnover ratio है 3 and our company is able to generate only 7.75 for single rupee of investment. Means our company is having very low asset turnover ratio. They are not able to utilize their assets properly. Capacity तो 3 rupees का है, means उनका जो sales revenue है that is very less as compared to standard, right? So this is the company's asset turnover ratio. Now write down below this. The firm has very low asset leverage. The firm has very low asset leverage because the total ratio, sorry, because the asset turnover ratio, sorry, because the asset turnover ratio of firm, because the asset turnover ratio of firm is less than industry asset turnover ratio, is less than industry asset turnover ratio. Full stop. Continue. It indicates that the given firm is not able to utilize its assets efficiently.
even firm is not able to utilize its asset efficiently. Full stop. Mark this question as important question. रिवीजन के टाइम अगर आप ये क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेते हो तो भी सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूलेज एप्लीकेशन है. ओके, नाउ आई गेस ओनली वन क्वेश्चन इज रिमेनिंग ना. 16th इज रिमेनिंग ना. Read 16th. Have you read? हाँ, वैसे तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, बट ओनली द थिंग इज दैट द न्यू पार्ट इन दिस प्रॉब्लम इज बीटा, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस बीटा इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. वैसे तो एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि आपको कमेंट करना था, इसलिए हमने ये प्रॉब्लम इंक्लूड किया है, ताकि सिर्फ कमेंट करने के लिए अगर क्वेश्चन आए तो यू शुड बी नोइंग व्हाट डू यू मीन बाय बीटा. फाइनल में देयर इज अ चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसमें एक कंसेप्ट ऑलमोस्ट एक चैप्टर जितना है, ठीक है, बट एटलीस्ट विल डिस्कस व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बीटा, बिकॉज जब आप फाइनल में जाओगे यू शुड बी नोइंग व्हाट इज द कंसेप्ट. क्योंकि फाइनल में मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट जस्ट बाय हार्ट द फॉर्मूला कि कैलकुलेट कैसे करना है, बट दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ बीटा. ओके, सो शुड वी डिस्कस 5 मिनट के लिए जो सबको सुनना है. ओके, सो बीटा मीन्स बेसिकली इट इज अ मेजरमेंट ऑफ रिस्क. just try to understand what do you mean by beta, and when we are calculating that beta, आपको ये जो प्रॉब्लम में बीटा दिया है 1 1 point something 2 3 etc., what is the implication, what is the significance of that number, we'll try to discuss. First of all, when you are investing in stock market, is there any risk? Definitely stock market में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो there is always a risk. What is the risk? What is the risk in investing in stock market as compared to say FD? आपके पास दो ऑप्शंस है, से आपने आर्टिकलशिप में से 10,000 रुपए सेव किया, ठीक है, आज आपको इन्वेस्ट करना है. अगर आप एफडी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो रेट ऑफ रिटर्न इज 6%. ऑन द कॉन्ट्ररी, यू आर ऑल्सो कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ठीक है, वहां पे आपके एक्सपेक्टेशन है 15%. वेयर देयर इज अ रिस्क, ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट. व्हेन यू आर सेइंग रिस्क, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? स्टॉक मार्केट में जो रिस्क है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट रिस्क? लूजिंग ऑफ मनी. ओके, मीन्स यू आर सेइंग पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, बट देन हो सकता है कि आपको से 5% रिटर्न मिले, ठीक है, लॉस तो नहीं हो रहा है बट 5% रिटर्न हो रहा है. कैन वी से दैट इज ऑल्सो रिस्क? डेफिनेटली, क्योंकि जब आप एफडी या बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर बैंक ने या गवर्नमेंट ने कहा कि 6% रिटर्न, तो कंफर्म 6% है. 6% से कभी वो डेविएट नहीं होगा. आर यू गेटिंग? बट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक्चुअल रिटर्न मे बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग. ठीक है, आप एक्सपेक्ट किस बेसिस पे करोगे? पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे. पिछले 5 साल में कंपनी ने 15% रिटर्न दिया, ठीक है, इज इट एन एश्योरेंस कि अगले साल भी 15% देगा? प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हो सकता है कम आए, हो सकता है ज्यादा भी आ सकता है, राइट. फॉर एग्जांपल इन दिस ईयर, अब 2019 तक जिस कंपनी ने हर एक कंपनी ने कुछ ना कुछ तो परफॉर्म किया रहेगा, बट 2020 में कोरोना की वजह से द रेट ऑफ रिटर्न वुड हैव डिप्लीटेड. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वाज लॉकडाउन, राइट. बट ऑन द कॉन्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जबरदस्त इनकम कमाया रहेगा, उनका रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज हुआ रहेगा. सो एवरी ईयर द रेट ऑफ रिटर्न इज चेंजिंग, राइट. सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, possibility of deviation of actual return from expected return is called as risk. बराबर.
अब जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आप रेट ऑफ रिटर्न भी देखोगे एंड रिस्क भी देखोगे। फॉर एग्जांपल, दो कंपनी आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रिलायंस है एंड से टाटा है। रिलायंस का एक्सपेक्टेड रेट है से 20%, टाटा का एक्सपेक्टेड रेट है 18%, रिस्क रिलायंस में है से 10%, टाटा में है सिर्फ 3%। कहां पे इन्वेस्ट करोगे आप? टाटा। Now, again that depends upon person to person. If I am the person who does like to take risk, right, then I'll be investing in Reliance, क्योंकि Reliance का expected return, ना ये जो रिटर्न है दिस इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% है एंड ये जो रिस्क है मींस पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन फ्रॉम योर एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये 10%। इसका मतलब इफ थिंग्स गो वर्स तो 20 का नीचे आके 10% तक आ सकता है, एंड इफ थिंग्स आर फेवरेबल तो 20 का इंक्रीज होके 30% तक भी जा सकता है। तो डेविएशन कितने परसेंट से हो सकता है? 10% से। Whereas टाटा इज मोर कंसिस्टेंट, 18% है, अगर कुछ गलत हुआ तो अभी 15% एश्योर्ड मिलेगा, एंड अगर थिंग्स गो वेल इन फेवर देन 21% तक मिलेगा। मींस द पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन फ्रॉम द सेंट्रल फिगर इज 3% एंड यहां पे 10%, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? ये जो हमने कैलकुलेट किया है पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन दिस नंबर, उसको हम क्या कहते हैं? फाउंडेशन में आपने स्टडी किया है इसलिए मैंने पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, when you are calculating the average of the deviation from your, हाँ exactly, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टडी किया ना, कहां पे किया था? स्टैट्स में। सो बेसिकली व्हेन यू आर मेजरिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन दैट रिफ्लेक्ट्स द रिस्क इनटू दैट पर्टिकुलर स्टॉक, बराबर। तो जब आप इन्वेस्ट करोगे आप एक्सपेक्टेड रिटर्न भी देखोगे एंड यू विल बी आल्सो सीइंग द रिस्क, राइट। तो जहां पे हम, मैंने कहां लिखा था वो रिस्क, वेयर रिटर्न द रिस्क, हाँ यहां पे लिखा था ना रिस्क। तो यहां पे द रिस्क इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा, दैट आई वांट टू हाईलाइट। क्योंकि बहुत बार आप कहीं ना कहीं तो रीड करते टाइम somewhere you'll be reading that risk is reflected by the standard deviation and somewhere you'll be reading risk is reflected by beta. What is the difference between that we are discussing? This risk we can classify into two parts: diversifiable risk and non-diversifiable risk. All this what we are discussing is practically important, आपको आगे जाके भी लगने वाला है, नो डाउट यहाँ पे नहीं लगने वाला, बट जब हम बीटा डिस्कस कर रहे हैं व्हाई नॉट टू डिस्कस विद कंसेप्ट प्रॉपर्ली। ओके, तो दिस रिस्क जो टोटल रिस्क है विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज that can be classified into two parts: diversifiable and non-diversifiable. What do you mean by diversifiable risk? That risk which can be diversified. Non-diversifiable means non-diversifiable, बराबर। Basically what happens, यहां पे हमने रिस्क मतलब क्या कहा है? बिकॉज ऑफ सम इवेंट्स आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था हो सकता है कि एक्चुअल रिटर्न कम आए, राइट। दैट कैन बी एनी इवेंट्स, राइट। बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न कम क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रिस्की इवेंट्स और रिस्की डिसीजंस व्हिच आर बीन टेकन, राइट। तो सम इवेंट्स विल बी अफेक्टिंग पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए, ठीक है, you are considering कि this whole 1 lakh you want to invest into ABC and company, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेड रेट था 20%। पूरा का पूरा 1 लाख आपने एबीसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड, ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी क्योंकि उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर था या सीईओ था, मिस्टर ए था, हिज मैनेजरियल स्किल्स वेर वेरी गुड, देयरफॉर कंपनी वाज परफॉर्मिंग बेटर। सपोज अनफॉर्चुनेटली मिस्टर ए की डेथ हो गई, so will the company be earning same rate of return 20%? They will not be earning. Now the expected return will directly come down to say 5%, right? Now this risk is exposed to whole amount 1 lakh. अब आपका पूरा जो 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर सिर्फ 5% से रिटर्न मिलेगा आपको। So whole investment has been exposed to the risk, right? Now this risk event, will it be applying to all the company in the economy or only ABC and company? ओनली एबीसी कंपनी, क्योंकि एबीसी कंपनी का डायरेक्टर हैज डाइड, बराबर। तो अगर आपने
इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 1 लाख इन वन कंपनी से 5,500 के 20 कंपनी सिलेक्ट करके इन्वेस्ट किया रहता, तो अब मिस्टर ए की डेथ होने के बावजूद सिर्फ 5,000 के ऊपर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कमाएगा, बट रिमेनिंग 95,000 विल बी अर्निंग सिमिलर और एक्सपेक्टेड रेट, राइट? नाउ कैन वी से आपका रिस्क कम हो रहा है यहाँ पे, so that risk which can be minimized by diversification means investing into multiple companies, that risk which can be minimized by diversification is called as diversifiable risk. So can I say diversifiable risk मतलब वो इवेंट जो स्पेसिफिक कंपनी के लिए अप्लाई हो रहे, राइट? सो दिस रिस्क कैन बेसिकली, ये जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज अ CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है? ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में ये सारा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके? तो एज पर CAPM, बाय डूइंग मोर डाइवर्सिफिकेशन आप रिस्क मिनिमाइज कर सकते हो। आर यू गेटिंग? यहाँ पे हमने सपोज 1,000 के 100 कंपनी कंसिडर किए रहेंगे, तो आपका बहुत सारा रिस्क अब कम होगा। 1,000 के ऊपर सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न कमाएगा, वेयर 99,000 विल बी अर्निंग अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट? So the risk which can be minimized can be is called as diversifiable risk. As per CAPM, always as per CAPM means as per this model, always you have to do diversifications ताकि आपका diversifiable risk कम आए, right? So this is something which you are not concerned with, which you are not required to count. The more important is non-diversifiable risk, मतलब आपने diversification किया तो भी कोई फायदा नहीं होगा, right? For example, एक्सेप्ट दैट फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोरोना के टाइम ऑलमोस्ट सारे कंपनीज के रेट ऑफ रिटर्न कम हुए थे। नाउ अगर आपने 50 कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, हर एक कंपनी के एक्सपेक्टेड रिटर्न कम आएंगे। सो इवन इफ यू आर डन डाइवर्सिफिकेशन, इट इज ऑफ नो यूज, ईच कंपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न विल कम डाउन। आर यू गेटिंग? सच इवेंट आर कॉल्ड एज नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। और अगर वॉर हुआ हो, तो वॉर के केस में भी सारी कंपनीज एडवर्सली अफेक्ट होंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, दे विल नॉट बी डूइंग डिमांड ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, इंटररिलेटेड सारे कंपनीज का रेट ऑफ रिटर्न कम आएगा, राइट? सो दिस रिस्क कैन नॉट बी मिनिमाइज, दे अप्लाई टू ऑल कंपनीज इन इकोनॉमी और मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन द इकोनॉमी, राइट? दिस रिस्क इज टू बी मेजर्ड एंड दिस रिस्क इज मेजर्ड बाय बीटा। कैसे कैलकुलेट करना है ये बीटा, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, दैट वी विल बी स्टडीइंग इन द फाइनल, बट एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग द कंसेप्ट कि बीटा मतलब वी आर मेजरिंग द नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। तो कभी कभार आपके सामने अगर स्टेटमेंट आए कि स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो मेजर्स रिस्क एंड बीटा आल्सो मेजर्स रिस्क, तो आपको मालूम होना चाहिए विच काइंड ऑफ रिस्क दे आर मेजरिंग। स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजरिंग टोटल रिस्क, whereas beta is measuring only non diversifiable risk, and that too standard deviation risk measure कर रहा है मतलब deviation measure कर रहा है, बीटा इज नॉट मेजरिंग द डेविएशन। बीटा नॉर्मली 1 के ऊपर नीचे रहेगा, ओके? नाउ व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ दैट नंबर? सपोज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में से 500 लिस्टेड कंपनीज है, ओके? इनमें से आपने एक रिलायंस कंपनी सिलेक्ट किया है फॉर डूइंग इन्वेस्टमेंट। whenever you will be investing stock market में, practically जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, you will be starting doing investment, right? Anyone is having a demat account over here? Do you do investment? So आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एनालिसिस करते हो या सिर्फ ब्रोकर ने कहा है इसलिए इन्वेस्ट करते हो? डू यू डू एनालिसिस? तो एनालिसिस करते टाइम क्या क्या देखते हो आप? बीटा देखते हो? Okay. Means you are considering on the market values as such. Okay. So in more of technical analysis, we study P ratio, we study the beta of the company, right? आपको सपोज इन्वेस्ट करना है, इस कंपनी का बीटा सपोज 2 है, ठीक है? आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस बीटा एज 2? स्टॉक मार्केट में जब 500 कंपनीज है, हर एक कंपनी का जो एवरेज रिस्क होता है, कंसिडरिंग दैट हम मार्केट रिस्क कैलकुलेट करते हैं जिसका बीटा ऑलवेज 1 कंसिडर किया जाता है। टोटल स्टॉक मार्केट का एवरेज बीटा ऑलवेज 1 कंसिडर किया जाता है। व्हेन यू कैलकुलेट द रिलायंस कंपनी बीटा एज 2, बेसिकली ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। रिलायंस कंपनी का स्टैंडर्ड डेविएशन एंड टोटल स्टॉक मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे बीटा कैलकुलेट किया जाता है, कंपैरेटिव बेसिस। फॉर एग्जांपल, टोटल स्टॉक मार्केट का एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन है से 10, ओके? एंड रिलायंस का स्टैंडर्ड डेविएशन है 20। तो इसका मतलब
बीटा ऑफ दिस रिलायंस इज 2। ओके, इसके लिए भी अलग अलग फॉर्मूला है, बट सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर स्टॉक मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, रिलायंस का 20 है, इसका मतलब बीटा इज 2। व्हाट इज इंप्लीकेशन ऑफ दिस? व्हेन वी आर सेइंग बीटा इज 2, इट इज अ रिलेटिव फिगर. Relative figure means in comparison with market risk, what is the risk of that company? So when I'm saying beta of Reliance company is 2, it implies that the risk of Reliance is twice as compared to market risk. मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट का जो एवरेज रिस्क है, उसके कंपैरिजन में ये जो शेयर हमने सिलेक्ट किया है उसका रिस्क ट्वाइस है. ओके, अगर टाटा का बीटा से 0.5 हो, means the Tata company is taking half of the risk as compared to market risk. Are you getting? So जब भी किसी कंपनी का एक या उससे ज्यादा रिस्क होगा, we can say मार्केट रिस्क से ज्यादा रिस्क ले रही है कंपनी. And whenever the beta of the company is less than 1, means we can say market risk या मार्केट के कंपैरिजन में the risk in that company is less, right? So when you'll be investing, you'll be also seeing the beta of the company, so that आपको आपका रिस्क पोटेंशियल अंडरस्टैंड करना होगा. Based on that, you will be considering the expected rate of return. Have you all understood? This was the whole concept of beta. If you have understood, very good. If not understood, still good. Don't bother. Just remember, beta is measurement of risk, and it is a relative measure of risk. मतलब मार्केट के कंपैरिजन में आपकी सिलेक्ट की गई कंपनी कितना रिस्क ले रही है, that will be understanding from the beta. Have you understood? हमेशा वन ही देना है, वो चेंज नहीं. मार्केट का टोटल बेसिकली हम कैलकुलेट ही कैसे करते हैं, इसको वन ही अज्यूम करके हम दूसरे कंपनी का बीटा कैलकुलेट करते हैं. मींस व्हाट यू आर डूइंग इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंपनी 20 डिवाइडेड बाय 10, तो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 1, मींस हम डिनोमिनेटर में मार्केट का ही ले रहे हैं. सो पर यूनिट ऑफ मार्केट रिस्क, हाउ मच दैट रिस्क अदर कंपनी इज टेकिंग, दैट वी आर कंसीडरिंग. तो बेस्ड ऑन दैट यू विल बी आल्सो एबल टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होना चाहिए उस पर्टिकुलर कंपनी का. बट दैट विल बी लर्निंग इनटू फाइनल. इस एपीएम एक पूरा चैप्टर है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसमें से एक पार्ट मैंने सिर्फ बीटा आपको एक्सप्लेन किया ताकि यहाँ पे रिलेवेंस आ रहा था. वैसे तो आपके नोट्स में मैंने बीटा के ऊपर नोट भी दिया हुआ है, बट डोंट बॉदर फॉर दैट. आपने रीडिंग नहीं किया तो भी चलेगा. आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बीटा के ऊपर कभी शॉर्ट नोट या कैलकुलेशन नहीं होगा. ओनली एट द मोस्ट यू हैव टू राइट अ नोट रिलेटिंग टू बीटा, बट दैट नॉट टू अबाउट द कंसेप्ट. यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना होगा एंड देन बीटा को आपको रिलेट करना होगा. सो कैन यू टेल मी, अगर किसी कंपनी का बीटा इंक्रीज हो रहा है तो उस कंपनी का लेवरेज इंक्रीज होगा या कम होगा? आई रिपीट, नॉट ओनली ऑपरेटिंग लेवरेज से टोटल लेवरेज इंक्रीज होगा, क्योंकि बीटा इंक्रीज मतलब रिस्क इंक्रीज. तो रिस्क क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि ये कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट एंड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा ले रही है, मतलब ये कंपनी भी रिस्क ज्यादा ले रही है. सो टोटल लेवरेज भी हायर साइड में होगा. ठीक है. सो एनी कंपनी इफ यू सी बीटा जिस कंपनी का ज्यादा होगा उसका लेवरेज भी ज्यादा होगा, बीटा अगर कम हो तो लेवरेज भी कम होगा. यही नोट हमें लिखनी है इस प्रॉब्लम में. Have you all understood? Shall we solve now problem? चलिए, हमें इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट क्या करना था? वैसे पहले तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना था, एंड देन यू हैव टू कमेंट एंड यूज ऑपरेटिंग लेवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दिस फर्म हैव डिफरेंट बीटा. सो यू विल बी एबल टू सी जिस कंपनी का बीटा सबसे ज्यादा है उसका ऑपरेटिंग लेवरेज भी ज्यादा ही होगा. क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप बैलेंस शीट अगर स्टडी करोगे, तो जो कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट हेवीली यूज कर रहा है उसका रिस्क ज्यादा होगा. तो दैट टाइम यू हैव टू थिंक कि इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. अगर उनका ग्रोथ दिख रहा है तो इन्वेस्ट करो क्योंकि रिटर्न ज्यादा आएगा, लेकिन अगर डिक्लाइनिंग दिख रहा है तो इन्वेस्ट मत करो क्योंकि इन्वेस्टर्स विल बी लूजिंग और इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी लूजिंग एट हायर रेट, व्हिच यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. हैव यू अंडरस्टूड? चलिए, फर्स्ट हमें ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना होगा, एंड ऑपरेटिंग लेवरेज करने के लिए कैलकुलेट करने के लिए यू हैव बीन गिवन चेंज इन रेवेन्यू डिवाइडेड, सॉरी नॉट डिवाइडेड, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम. तो हमने एक शुरुआत में फॉर्मूला लिखा था, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड व्हाटएवर इट इज. तो ये फॉर्मूला में यूज करना होगा, राइट? तो व्हाट विल डू, विल आल्सो टैबुलेट द कैलकुलेशन. तो राइट डाउन हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. नीचे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट था या सेल्स रेवेन्यू था?
operating profit divided by percentage change in sales revenue. Now same columns we can draw, serial number, particulars. हमें न्यूमरेटर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए ना, तो हम पहले चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखेंगे. चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, change in sales revenue and degree of operating leverage. अगर मैं कॉलम को सीरियल नंबर दूं तो फिफ्थ कॉलम विल बी इक्वल टू थर्ड कॉलम डिवाइडेड बाय फोर्थ. ये पर्टिकुलर्स कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, इसमें कंपनी का नाम फिट होने इतने स्पेस रखो आप. पहली कौन सी कंपनी थी? ऐश्वर्या लिमिटेड. मैंने पहले चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉलम लिखा है, तो 25 एंड 27 ना. मैंने सिर्फ कॉलम इंटरचेंज किया है ताकि फॉर्मूला में न्यूमरेटर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इसलिए 0.93. दूसरी कंपनी कौन सी थी? तब्बू लिमिटेड. तो इसका ऑपरेटिंग इनकम 3225. हाउ मच? 1.28. डायरेक्ट कॉलम लिखा तो भी चलेगा. देन नेक्स्ट, ट्वेंटी थ्री 36 यानी कि 3623 ना. 1.5. यहाँ पे 40 एंड 20, 21 ना. अब चेक कीजिएगा कि यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज सबसे ज्यादा किसमें है? 1.92. चेक कीजिएगा उसी कंपनी का क्या बीटा सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज, राइट? एंड किस कंपनी का सबसे कम ऑपरेटिंग लेवरेज है? ऐश्वर्या लिमिटेड 0.93. तो बीटा चेक कीजिएगा कि उस कंपनी का सबसे लोअर है, राइट? बिकॉज बेसिकली बोथ आर द मेजर ऑफ रिस्क ओनली, राइट? Only the thing is that operating leverage reflects the operating risk from the point of view of fixed cost, and beta reflects the risk in comparison with the market risk. Okay, so write down. पहले तो हमें कमेंट लिखना होगा based on operating leverage, and then you have to write down the comment on the basis of beta. तो इसके नीचे लिखो comment. Next line, write down the operating leverage. The operating leverage of Sujata Limited is highest. The operating leverage of Sujata Limited is highest. That is, the operating risk. That is, the operating risk is highest. That is, the operating risk is highest as compared to other companies. Operating risk is highest as compared to other companies. Full stop. Next line, same comment में next line लिखिए. The operating leverage of Aishwarya Limited is lowest
The operating leverage of Aishwarya Limited is lowest, which indicates which indicates operating risk is minimum, which indicates operating risk is minimum. Full stop. Next line. Tabu and Mahima Limited are moderately risky firm, risky company. Tabu and Mahima Limited are moderately risky company. Basically, this is the comment on first question. Comment also operating leverage के ऊपर हमें comment करना था. Now second question, use operating leverage to explain why these firms have different beta. हमें relate करना होगा. Same thing. कि operating leverage मतलब क्या? It reflects the operating risk and beta reflects the comparable risk with the market. Both are the measure of risk. Therefore, when operating leverage is higher, beta is also higher, and when operating leverage is lower, beta is also lower. So below write down note on beta. This is the second part of your answer. Note on beta. Write down. Beta is a measurement of risk. Beta is a measurement of risk, comma, it measures the riskiness of an asset or share. It measures the riskiness of an asset or share in relation to stock market risk. In relation to stock market risk. Full stop. Higher the beta, higher is the risk. Higher the beta, higher is the risk. Continue. Full stop. Beta is affected by several factors. Beta is affected by several factors, which includes operating and financial leverage. Which includes operating and financial leverage. बेसिकली यहाँ पे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज में हम सिर्फ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स which will be affecting the riskiness of the company, right? अगर कोई कंपनी भले वो फिक्स्ड कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा ले रहे, बट देन दैट कंपनी आर might be taking very harsh decision. Suppose suddenly employee को निकाल दिया, that will be also adding to the risk of the company, right? So there are other factors as well, but leverage is also an important factor which will be affecting the company's beta, right? So this was whole a note on beta. Now below you have to write operating leverage relation. So write down as a paragraph या next line पे लिखो. Operating leverage measures operating risk. Operating leverage measures the operating risk. Full stop. Continue. If operating leverage is high, if operating leverage is high, then beta of the company will also be high. Then beta of the company will also be high.
Continue. We can observe, full stop and continue. We can observe that beta of Sujata Limited is highest. Beta of Sujata Limited is highest because operating leverage is highest. Beta of Sujata Limited is highest because operating leverage is highest. Full stop. Similarly, beta of Aishwarya Limited is lowest because beta of Aishwarya Limited is lowest because operating leverage was lowest. Because operating leverage was lowest. Any difficulty so far? With this, we have completed with this problem. Okay. Now we are going to start with the exam questions. Okay, conclude नहीं कर रहे हम. What we'll do? MTK के जो क्वेश्चंस है ना, RTP के क्वेश्चंस है वो होमवर्क के लिए रखेंगे. एग्जाम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ठीक है. I'll be giving you solution also. तो प्रिंटेड सॉल्यूशंस है, बट देन एग्जाम के क्वेश्चन एक दो बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए. ठीक है. आपके साइट पे जो लास्ट 3-4 इयर्स क्वेश्चन पेपर जो अपलोडेड है वहीं से मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए. एंड देन लास्ट 3 इयर्स के एमटीपी, लास्ट 3 इयर्स के आरटीपी के क्वेश्चंस. सो अगर आप ये सॉल्व कर पाते हो तो आपके एग्जाम में लेवरेज के लिए 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे डेफिनेटली विल बी एबल टू सॉल्व. राइट. तो चलिए सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं. मई 2018 का क्वेश्चन है. 5 मार्क के लिए पूछा गया था. इट वाज आस्किंग दैट कंपलसरी क्वेश्चन. आपको पेपर का फॉर्मेट याद है ना. फर्स्ट क्वेश्चन में कंपलसरी क्वेश्चन रहेंगे 4, उसमें एक क्वेश्चन था 5 मार्क के लिए पूछा गया था. अज्यूम दैट यू आर राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जाम. आप रीड करो, सॉल्व करो. यू आर हैविंग 7 मिनट्स टू सॉल्व. चलिए 8 मिनट्स. वन पॉइंट 8 एक मार्क मिल गया. स्टेप वाइज मार्क्स है. हाउ मच फिक्स कॉस्ट. Now when you are writing exam question, no shortcuts to be used.
आप CL इज इक्वल टू OL इंटू FL ऐसे कुछ नहीं लिखोगे. कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज. उससे होगा क्या, नॉर्मली ऐसे नहीं कि आप अगर CL एक्सेट्रा लिखते हो तो मार्क्स कट होंगे, लेकिन अगर आप मैनेज करते हो 70-75 के ऊपर जब जा रहे हो तो एग्जामिनर ये छोटे मोटे पॉइंट्स के लिए आपके मार्क्स कट कर सकता है. एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डेफिनेटली आप 70 के ऊपर जा सकते हो. ओके, सो इसलिए सिली मिस्टेक्स या जस्ट एग्जामिनर को चांस मत दो मार्क्स कट करने की. हाउ मच एग्जैक्टली? 4,50,000. हाउ मच? कितना रहा है? 27 एग्जैक्टली. होगा आपका एवरीवन. सो इतना सा आप सॉल्व करते हो तो 5 मार्क्स मिलेंगे. एंड आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, राइट? इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे, एक मार्क भी लूज नहीं करना है. एंड इफ यू आर रिटन एवरीथिंग प्रॉपरली तो आपको डेफिनेटली 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे. 4,50,000 if you are getting fixed cost, then it is correct. %27 will be of PV ratio. Just check whether you are presented in this manner. आपने फर्स्ट वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज लिखा, एंड देन नॉर्मल फॉर्मूला कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग द फिगर्स. एंड जब भी आपका आंसर आएगा, यू हैव टू हाईलाइट इट. हाईलाइट मतलब जस्ट अंडरलाइन करो, ताकि एग्जामिनर का फोकस आपके आंसर जो है वहां पे ही जाए. So you'll not be going into detail of each step. Okay. Second working calculation of fixed cost. इसमें आपको अलग अलग से EBIT, कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा, इसलिए हमने इसमें फर्स्ट लिखा है EBIT. I will be writing the formula, substituting the figures, and EBIT you should be getting 22,50,000. मैंने यहाँ पे just step जो substituting the numbers and calculation दिखाया नहीं, but you will be showing that properly, right? उसके बाद second working contribution. Again applying the formula, substituting the figures and calculating the contribution, and then third fixed cost. And जब भी आपका fixed cost आएगा 4,50,000, you have to underline it.
and then PV ratio, again formula you will be writing properly, contribution divided by sales into 100, that is 27%. आपके एग्जाम में प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट. अब मुझे बताइए इसमें क्या डिफिकल्टी थी. वैसे तो हर एक ने आपने कैलकुलेट किया. कंप्लीटेड. अगर आपने कंप्लीट किया है तो थर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो. थर्ड वाज बीन आस्क्ड इन नवंबर 2018, मतलब मई 2018 से आगे मैंने क्वेश्चन पेपर्स लिए. नवंबर 2018 में 10 मार्क के लिए लेवरेज के ऊपर क्वेश्चन था. थर्ड क्वेश्चन में 12% डिबेंचर्स है. यहाँ पे ये 12% डिबेंचर्स है. Have you all completed second? Have you read third? Third question was been asked in November 2018 for 10 marks. Solve it yourself. Any answer? Have you drawn income statement? How much is the net earnings available after tax? 1 35 lakhs or 30 lakhs 50,000? 1 crore 35 lakhs. What is the sales you're getting? Right. Variable cost, contribution, fixed cost. How much? How much? 20 lakhs. बराबर ना? Then EBIT 1.8. यहाँ पे गलती हुआ क्या? How much are you getting, Tidiksha? Earnings 1.8, correct. Sales 5 crores. एक बार आपको अपने सेल्स कैलकुलेट किया तो इनकम स्टेटमेंट तो जस्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एवरीथिंग यू हैव टू पुट अप. So I am solving. You can also solve simultaneously. This question was been asked for 10 marks.
Have you shown this working calculation of sales? 5 crores. आपके एग्जाम में वर्किंग नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद जब लेवरेज कैलकुलेट करोगे तो आपको कमेंट भी करना है हर एक लेवरेज के ऊपर. सो इफ यू आर राइटिंग, कीप सम स्पेस, 2-3 लाइंस, ताकि हम कमेंट कर सकें. कंट्रीब्यूशन टू fixed cost excluding interest has been given 20 lakhs. It is 0.2. इंटरेस्ट के लिए आपको दिया हुआ है हाउ मच वाज द लोन. नॉन करंट लायबिलिटी 12% डिबेंचर्स, एंड डिबेंचर्स की अमाउंट थी 50 lakhs. It will be 50 lakhs into 12%. तो आएगा 6 lakhs. 6.06. टैक्स का रेट क्या दिया है आपको? 25%. Just check whether you have calculated earnings available to equity shareholders 1.305 net earnings after tax. This was your income statement. मतलब पहले आपने वर्किंग दिखाया रहेगा सेल्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, एंड देन इनकम स्टेटमेंट. इस तरह से आपका इनकम स्टेटमेंट होना चाहिए. Just once check whether you are shown in this manner. एग्जाम में आप कॉलम्स एक्सेट्रा ड्रॉ करते नहीं बैठोगे, पहले आंसर कंप्लीट कर लो. वंस ऑल द क्वेश्चंस आर बीन कंप्लीटेड, उसके बाद टाइम मिले तो आप स्केल से जो भी डेकोरेशन करना है कर सकते हो. राइट. अब आपको क्या कैलकुलेट करना था? ऑपरेटिंग लेवरेजेस से यहाँ पे थर्ड लिख सकते हैं हम. इसमें फर्स्ट ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि कमेंट करना है इसलिए एक एक लेवरेज के ऊपर हम यही पे कमेंट कर सकते हैं. फॉर्मूला लिखेंगे. दिस विल बी कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. कंट्रीब्यूशन अपना कितना था? 2 and 1.8. So 2 divided by 1.8, 1.11. Written here, you have to comment also. So write down operating leverage is 1.1, which indicates
which indicates if sales changes by 1%, if sales changes by 1%, the operating profit, that is EBIT, the operating profit, that is EBIT, will change by 1.11%. Written, that is it indicates sensitivity of EBIT, it indicates sensitivity of EBIT to change in sales at particular level, to change in sales at particular level. Written, this was operating leverage. Now next, financial leverage. This will be equal to EBIT divided by EBT, 1.8 divided by 1.74. Written. सो कमेंट आप लिखोगे या मैं डिक्टेट करूं? लिखोगे आप? बेसिकली आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इट इंडिकेट्स द 1% चेंज इन ईबीआईटी विल रिजल्ट 1.03% चेंज इन ईपीएस. ओके, तो कमेंट के लिए 2 लाइन ब्लैंक रखो एंड देन राइट डाउन थर्ड, कंबाइंड लेवरेज. This is calculated as operating leverage into financial leverage. So it is coming to 1.15. बराबर ना? अब इसका कमेंट लिखो. It indicates that 1% change in sales, 1% change in sales will result in 1.15% change in EPS. 1% change in sales will result in 1.15% change in EPS. लिखा? Continue. The combined leverage studies the choice of fixed cost in cost structure and, अब ये जो आपने लिखा है चॉइस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन कॉस्ट स्ट्रक्चर, मतलब दिस इज रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग लेवरेज, राइट? एंड व्हाट विल बी राइटिंग? यूज ऑफ डेट इनटू कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट विल बी रिलेटिंग टू फाइनेंशियल लेवरेज. उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ही तो कंबाइंड लेवरेज होता है, राइट? सो वी हैव रिटन combined leverage studies the choice of fixed cost in cost structure and choice of debt in capital structure. Debt in capital structure. Full stop. Continue. It studies how sensitive is the change in EPS, how sensitive is change in EPS as a result of change in sales.
as a result of change in sales. That's it. This question was been asked for 10 marks. अब मुझे आप बताइए इसमें क्या डिफिकल्टी थी कोई? ओनली द सिंपल थिंग वाज देयर. एंड एग्जाम में आपको याद रखना है जब आप कमेंट के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कमेंट टू द पॉइंट ही लिखना है. ठीक है, जितना पूछा गया कमेंट मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज वो क्या सिग्निफाई करता है इतना ही लिखना है. कंबाइंड लेवरेज क्या सिग्निफाई करता है उतना ही लिखना है. अननेसेसरीली जितना आपके पास नॉलेज है लेवरेज का वो सब मत लिखो वहां पे. ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है जब टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट के लिए तो जितना रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज्यादा बच्चे लिखते हैं. जो उन्होंने स्टडी किया उनको बस एग्जामिनर को ही दिखाना है कि मुझे ये सब मालूम है, तो जितना नहीं पूछा गया है वो भी लिखते हैं. एंड देन व्हाट हैपेंस, एग्जामिनर विल बी कटिंग योर मार्क्स. एक्स्ट्रा लिखने की वजह से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे. एग्जामिनर विल बी चेकिंग कि टू द पॉइंट लिखा है क्या नहीं आपने. दिस इज नॉट योर बीकॉम एग्जाम, राइट? तो अननेसेसरली ज्यादा मत लिखो. नॉर्मली 2 से 3 लाइन का ही कमेंट होना चाहिए. ओके, फॉर वन पर्टिकुलर सेट. कंप्लीटेड. सो टेल मी, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, आप चलिए कमेंट में एक आध दूसरा मार्क्स अगर आप लूज भी करते हो तो भी आप 8 से 9 मार्क्स तो डेफिनेटली स्कोर कर पाओगे, राइट? रीड फोर्थ. ये भी 10 मार्क के लिए पूछा गया था मई 2019 में. हम्म, 80% क्या? एग्जैक्टली. एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन वैसे हमने सॉल्व किया हुआ है, बराबर. यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, कहाँ गया, ये देखिए 6th क्वेश्चन. ordinary share capital debt sales increased by 20% from 1 lakh to 1,20,000 units. The selling price 10 etc is been given and you are required to calculate percentage increase in EPS and financial leverage when the sales increase from 1 lakh to 2 lakh 120 and operating leverage. and दोनों का हमें कमेंट भी करना था. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमें सॉल्व किया, यहाँ पे सिर्फ फिगर्स चेंज किए गए. ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड वे बैक इन 2000 समथिंग. सिमिलर क्वेश्चन रिपीट किया गया था मई 2019 में. ठीक है, ये जो क्वेश्चन सेट है जब से मैंने क्लास स्टार्ट किया ये सारे क्वेश्चंस तो कंटिन्यू कर रहा हूं मैं. बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल इज जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो सिमिलर क्वेश्चंस ही आएंगे एग्जाम में. ठीक है, तो ये आप होमवर्क के लिए करोगे. 6 क्वेश्चन आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो, बट देन 10 मार्क का क्वेश्चन है यानी कि 14 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व भी करना है. ओके, 14 या 15 मिनट्स. नॉर्मली हर एक मार्क 1.8 मिनट्स के लिए आप कंसिडर कर सकते हो, बराबर ना. 3 आवर्स मतलब 180 मिनट से आपको 100 मार्क्स का पेपर कवर करना है. मींस पर मार्क 1.8 मिनट्स. मोर और लेस सेम नहीं रहेगा. सम क्वेश्चंस विल टेक मोर टाइम बट मार्क्स वेटेज कम रहेगा. बट ऑन एन एवरेज आप कंसिडर कर सकते हो 10 मार्क का क्वेश्चन हो तो ट्वाइस यानी कि 20 मिनट्स या 18 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करना है. ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए कीजिएगा. फिफ्थ क्वेश्चन वाज बीन आस्क्ड इन नवंबर 2019 10 मार्क के लिए. रीड करें, रीड कीजिएगा. पहले 3 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पहले क्या करोगे आप नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करोगे, राइट. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एक्सेट्रा. सेल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको एसेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है एंड टोटल एसेट्स आर बीन गिवन. सो सेल्स यू कैन कैलकुलेट. टोटल एसेट कितना है 6 लाख, एसेट टर्नओवर रेशियो 4 है तो सेल्स कितना आएगा
24 lakhs. तो सेल्स 24 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट आएगा 60% ऑफ दैट, कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है 2 lakhs दिया है क्या? हाँ, फिक्स कॉस्ट लेस करोगे ईबीआईटी मिलेगा, देन लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए डेट तो दिया है आपको 10% से डेट है 2,40,000, यानी कि 24,000 इंटरेस्ट रहेगा, तो आप ईबीटी कैलकुलेट कर सकते हो। टैक्स रेट इज ऑल्सो बीन गिवन 30%, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। वंस यू गेट ऑल दिस फिगर्स, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड दिस विल बी द नॉर्मल कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कैलकुलेट करना है, ईबीआईटी कैलकुलेट करना है अगर ईपीएस 1, 2 या 0 हो तो। यहां पे तो फर्स्ट वर्किंग आप नॉर्मली कैलकुलेट कर पाओगे। हाउ वी कैन कैलकुलेट ईपीएस, ईपीएस कैसे कैलकुलेट करोगे आप, फाइनेंशियल लेवरेज, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय, and which profit you have to take, EBIT, EBT, earnings after tax, that is net earnings available to equity shareholders divided by number of equity shares, बराबर। तो नेट अर्निंग्स यहां पे तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो वी कैन से ईपीएस इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, आपको क्या मिलेगा ईबीटी। अब इसमें से टैक्स लेस करना है, सो 1 माइनस टैक्स रेट लिख सकता हूं मैं यहां पे, बराबर। सो दिस विल बी द नेट अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना दिया आपको 18,000, टोटल कैपिटल है 1,80,000 एंड फेस वैल्यू इज 10, तो 18,000। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, अगर आपका ईपीएस कहां गया, अगर आपका ईपीएस 1 हो, केस 1, इफ ईपीएस इज 1 तो ईबीआईटी कितना ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ईबीआईटी को टाइम बिंग में एक्स अज्यूम कर सकता हूं, राइट। डेट कंटेंट कितना था कैपिटल में 2,40,000, 10% डेट, सो इट विल बी 24,000 इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स रेट दैट इज पॉइंट, टैक्स रेट कितना है 30 ना, टैक्स रेट, दिस विल बी 1 माइनस 30, ये आएगा नेट अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय 18,000। तो नाउ ओनली मिसिंग फिगर इज एक्स, कैन कैलकुलेट द ईबीआईटी। ये रहेगा केस 1। केस 2 में क्या रहेगा, ईपीएस विल बी 2 नाउ, ईपीएस 2 लोगे, सो 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 24,000 इंटू 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय 18,000। यहां पे कितना है आपका एक्स, कैलकुलेट किया क्या आपने 17, ईबीआईटी कितना है 4, 174 नहीं आएगा, 49714, 49714 इतना आएगा। पहले तो इसको 0.70 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस 0.30 मतलब, सो 0.70x माइनस 24,000, ये आएगा 18,000 इज इक्वल टू, ये यहां पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा, इज इक्वल टू 0.70x माइनस 24,000 इंटू 0.70 कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ना ये 24,000 इंटू पॉइंट, हाउ मच 16,800, तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस होगा, so it will be 34,800 is equal to 0.70x, so x is equal to 34,800 divided by 0.70, कितना आ रहा है, राइट। एंड एग्जैक्टली सेम आप केस 2 केस 3 में कैलकुलेट कर सकते हो, जब ईपीएस आपको दिया हुआ है कितना 2 and 0, so isn't this question simple? फर्स्ट पार्ट तो एकदम सिंपल है, अगर फर्स्ट पार्ट भी कैलकुलेट करते हो तो 5 से 6 मार्क्स तो वहीं पे मिलेंगे, राइट। एंड ये भी तो सिंपल पार्ट है, ओनली द थिंग इज दैट ये क्लिक होना इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना। ईपीएस का वैसे तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, ईपीएस का कंसेप्ट समझो, ईपीएस इज द अर्निंग्स अवेलेबल पर शेयर, तो टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स,
सो यहाँ पे सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर लोगे। वैसे तो मैं सॉल्यूशन भी दे रहा हूं तो आप सॉल्व कर सकते हो। व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शो बाय दिस एग्जाम क्वेश्चन इज कि आप एग्जाम के क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लो तो आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में भी सिमिलर क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व। ओके, अब मई 2020 का तो एग्जाम हुआ नहीं था एंड नवंबर 20 का यहाँ पे लिया नहीं है, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज रिमेनिंग जो आरटीपी के क्वेश्चंस है एंड एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस है, क्या आप सॉल्व करोगे खुद से या यहाँ पे सॉल्व करने हैं हमें? सॉल्यूशन में दे रहा हूं आपको तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली आज इवनिंग में मुझे यही लेना था, बट ड्यू टू सम रीजन इवनिंग में पॉसिबल नहीं है क्लास, तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस प्रॉब्लम्स एज होमवर्क। सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। सॉल्यूशन दिया है बट देन डोंट चेक फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्व इट, उसके बाद सॉल्यूशन में क्रॉस चेक करो, राइट? क्योंकि आपको एग्जाम विदाउट लुकिंग सॉल्यूशन देनी है। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व ईच टॉपिक विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशंस। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो कोई भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जब आएगा आपको डर नहीं लगेगा। नॉर्मली होता क्या है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन सामने रख के स्टडी करते हैं, एग्जाम में आपको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना होता है, तो कहीं ना कहीं तो स्टक अप हो जाते हैं। सो बेटर इट इज प्रैक्टिस विदाउट लुकिंग सॉल्यूशंस एज लाइक इट इज एग्जाम कंडीशन। हर एक प्रॉब्लम स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना, तो आज आप ये कर सकते हो। सो टुडे इवनिंग जो 4:30 से लेके 6:30 करना था हमें, उस टाइम में आप भले अपना क्लास नहीं रहेगा लेकिन उस टाइम में आप ये सॉल्व कर लो। ओके, सो विल कंक्लूड फॉर टुडे, टुमारो विल बी स्टार्टिंग विथ न्यू चैप्टर। ओके।